Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal, and in this video lecture, we'll be talking about China's connectivity projects. Well, recently, China's connectivity projects, especially those which are concerning India, are again in news, which are China's Belt and Road Initiative and China-Pakistan Economic Corridor. They are in news, and in this video, we'll discuss both of them in detail. Well, this video is part of our editorial analysis, and the reason of discussion today about China's Belt and Road Initiative and China-Pakistan Economic Corridor is our External Affairs Minister's statement. So recently, in Shanghai Cooperation Organization, our External Affairs Minister said that the connectivity projects should respect a country's sovereignty, they should respect the territorial integrity of other countries, and they should respect international law. And the reference of this, that the connectivity project should respect the sovereignty, integrity, international law, this is being said in reference to China-Pakistan Economic Corridor and the China's Belt and Road Initiative. बिकॉज ये ऐसे दो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटरनेशनल लॉज के अगेंस्ट हैं. दे कंसर्न अस. सो देयरफॉर इन दिस वीडियो विल डिस्कस बोथ ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स इन डिटेल. ये टॉपिक जीएस पेपर 2 पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है. इंडिया एंड इट्स नेबरहुड में भी इन दोनों ही कॉन्सेप्ट का इम्पॉर्टेंट रोल है. जब हम इंडिया चाइना रिलेशंस देखते हैं या फिर इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस देखते हैं, तो चाहे वो BRI हो, चाहे वो CPEC हो, दोनों को हम मेंशन करते हैं. तो क्या है ये, इनको एक बार गो थ्रू करते हैं. हम हमारी बहुत सारी वीडियोस में इसकी बात कर चुके हैं, बट क्योंकि ये दोबारा करंट अफेयर में है, दोबारा न्यूज़ में आया है बिकॉज ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, सो टुडे अगैन विल गो थ्रू इट. So let's begin with the China's Belt and Road Initiative, BRI. चाइना का ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये 2013 में लॉन्च किया गया था. एंड इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में बेसिकली चाइना का ये गोल है कि साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, द गल्फ रीजन, अफ्रीका, यूरोप, इन सब में एक कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश की जाए. एक लैंड रूट्स और सी रूट्स के नेटवर्क के साथ, कनेक्टिविटी के साथ पूरा साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, गल्फ रीजन, अफ्रीका, यूरोप, इन सबको आपस में लिंक किया जाए. इट्स अ $multi-billion इनिशिएटिव ऑफ चाइना. सो फॉर दिस इट इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव्स. पूरा एशिया से लेके यूरोप तक एंड इवन बियॉन्ड दिस एंटायर रीजन विल नीड डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट ओवर हियर. And more than 100 countries have signed agreement with China that they will cooperate with China's Belt and Road Initiative. They will build railways for that, ports, highways, or other infrastructure which is needed. It was announced by the Chinese President Xi Jinping led regime in 2013. इसमें बेसिकली 5 ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको इन्वॉल्व किया गया है. पहली बात, वो जो कंट्रीज़ हैं दे विल नीड पॉलिसी कोऑर्डिनेशन इस विजन को सामने रखते हुए टू हैव दिस कनेक्टिविटी. एंड क्योंकि एक कनेक्टिविटी बनेगी तो इससे ट्रेड की प्रमोशन होगी. इन डिफरेंट रीजन्स जो वर्ल्ड के हैं, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया से जुड़ पाएगा, सेंट्रल एशिया अफ्रीका से, यूरोप से, तो जो कनेक्टिविटी है वो बनेगी, ट्रेड प्रमोट होगा, फिजिकल कनेक्टिविटी बनेगी. एंड बेसिकली इससे जो रेनमिनबी है विच इज़ द ऑफिशियल करेंसी ऑफ चाइना, उसकी भी इंटरनेशनलाइजेशन हो पाएगी. अलॉन्ग विद इट, इट विल हैव पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट एज वेल. इट विल एनहांस द कॉन्टैक्ट बिकॉज जब कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी एंड ट्रेड इज हैपनिंग, तो पीपल एंड पीपल कॉन्टैक्ट जो है वो भी यहाँ पे इंक्रीज होगा. इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जो रूट्स रखे गए हैं, एक तो है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, जिसे हम न्यू सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट बोल सकते हैं. इसमें बेसिकली जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चाइना है, वहाँ पे प्रॉपर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट हब्स जो बने हुए हैं,
उनकी कनेक्टिविटी बनाई जाएगी कि वहाँ से आप यूरेशिया पहुँच पा रहे हैं, आप सेंट्रल एशिया, यूरोप वहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हो, और आप म्यांमार की तरफ भी रीच कर पा रहे हो। तो साउथ ईस्ट एशिया में भी आपकी एंट्री हो रही है और आप यूरेशिया की तरफ भी जा रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका रोड रीजन, मेनली सिल्क रोड इकोनॉमिक, जो आपका सिल्क रूट था, यहाँ पे हम उसे न्यू सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट कह रहे हैं। दूसरा है मैरीटाइम सिल्क रोड। अब मैरीटाइम सिल्क रोड में बेसिकली सी रूट्स के थ्रू जो साउथ चाइना सी है, इंडो चाइना एरिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, इंडियन ओशन है, इन सब में एक कनेक्शन बनाया जाएगा, ताकि आप चाइना से साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, इन सब के बीच में मैरीटाइम कनेक्टिविटी भी इन्हेंस हो। तो एक तो रोड कनेक्टिविटी की बात यहाँ पे मेजर एरिया आता है, दूसरा मैरीटाइम कनेक्टिविटी की यहाँ पे बात आती है। दिस इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। पूरी एक ऐसी बेल्ट बनाई जा रही है जहाँ पे डिफरेंट रीजन्स जो हैं वो आपस में जुड़ पाएँ, एंड मेनली चाइना का यहाँ पे फिजिकल कनेक्टिविटी हो, ट्रेड हो, रेनमिनबी की इंटरनेशनलाइजेशन हो, ये सब इसके कुछ एम्स रखे गए हैं। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इस प्रोजेक्ट से, इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है चाइना के लिए। अब देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो वो बेनिफिट्स हैं जो कि चाइना ने ऑफिशियली स्टेट किए हैं। तो चाइना तो ये कहता है कि उनका ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है, ये रीजनल डेवलपमेंट के लिए है। ये रीजनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं जिससे कि डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में, डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड जो हमारे पास हैं, इनके बीच में कनेक्टिविटी बढ़ पाएगी, एंड दैट इज़ आवर एरिया ऑफ कोऑपरेशन। वी वॉन्ट टू हैव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिससे कि डिफरेंट रीजन्स के बीच में, नेशंस के बीच में जो कोऑपरेशंस हैं वो बढ़ सके, कनेक्टिविटी बढ़ सके। ये उनका ऑफिशियली बेनिफिट उन्होंने स्टेट किया है। दूसरा ये कि इससे जो इकोनॉमिक और ट्रेड कोऑपरेशंस हैं वो BRI कंट्रीज़ के बीच में बढ़ पाएगी, तो इकोनॉमिक इन्हांसमेंट भी होगा, ट्रेड बढ़ेगा। अब जब कनेक्टिविटी बन जाएगी तो इससे कल्चरल कोऑपरेशंस होंगे, कल्चर एक्सचेंज होगा, सोशल एक्सचेंजेस होंगे, तो आपस में कंट्रीज कोऑपरेट कर पाएंगे और डिफरेंट फील्ड्स में एक्सचेंजेस हो पाएंगे। ये ऑफिशियली चाइना ने बेनिफिट्स को स्टेट किया है कि भाई ये एम रखते हुए, ये इनिशिएटिव रखते हुए हमारा ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया है। बट इवन इफ वी टॉक अबाउट दिस Belt and Road Initiative, it is the most emblematic of China's economic and industrial might. It's a symbol, it's an emblem. We can illustrate what China's economic and industrial might is thinking right now. What is their strength? वो हम यहाँ से देख पा रहे हैं. Because with this project, China is having their ambition with which they can have a global influence, a global presence. They can have political influence and also strategic influence. So this gives a good picture of how China's economic and industrial situation is right now and how prepared they are in terms of their ambitions for the global political and strategic influence. Now, infrastructuring spending at home, it became less sustainable for China. So therefore, China has shifted their emphasis to boost the global competition of domestic businesses. They've completely shifted it. It's gonna help China in developing its western region also. चाइना का जो अभी तक अगर आप देखें तो ईस्टर्न रीजन जो है वो मेनली चाइना का डेवलप्ड है, वेस्टर्न एरिया उतना डेवलप्ड नहीं है, लेकिन वेस्टर्न एरिया से ही सेंट्रल एशिया की तरफ कनेक्टिविटी बनेगी और वहीं से आप यूरोप जा पाएंगे। तो इस प्रोजेक्ट की हेल्प से चाइना का जो वेस्टर्न एरिया है वो यहाँ पे डेवलप्ड होगा। एंड ऑल्सो जो नेविगेशन है, बिकॉज यहाँ पे मैरीटाइम रूट्स को भी प्रिपेयर किया जा रहा है, सो दे वुड बी सेफ नेविगेशन। जो चेक पॉइंट कंट्रीज हैं उनको अपना पार्टनर बना लीजिए BRI में, सो दे वुड बी सेफ नेविगेशन ओवर द सीज एज वेल. It will also gonna help China to improve their strategic and economic relations with the neighboring countries and as well as far west countries too. So with this, we are also getting the picture that China wants to create a new regional order.
China wants to replace the America's led liberal international order. And when all these routes are secured, you have proper land route, you have proper maritime route. So this will even help China to secure their energy and mineral supplies also. Today, there is a thing called as Malacca Dilemma, Strait of Malacca, जो आपके मलेशिया और सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच में लाई करती है, मेनली मलेशिया एंड इंडोनेशिया, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अभी क्या है कि जब चाइना को तक जो सप्लाई जाती है वेस्ट एशिया से या फिर अफ्रीका से, वो इंडियन ओशन से होकर स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर गुजरती है, तब वहाँ से जाके वो साउथ चाइना सी में जाती है, देन इट गोज टू चाइना। अब मलक्का इज डोमिनेटेड बाय यूएसए। सो दिस इज वन डिलेमा फॉर चाइना, जिसे मलक्का डिलेमा कहते हैं, कि जो चाइना का मेजॉरिटी ट्रेड है इट इज पासिंग थ्रू यूएस डोमिनेटेड मलक्का स्ट्रेट। लेकिन अगर चाइना ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाता है तो इससे इंडियन ओशन में उनको डिफरेंट मैरीटाइम फैसिलिटीज अवेलेबल हो पाएंगी एंड देयरफॉर दे विल हैव मोर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देन द यूएसए इन द रीजन ऑफ इंडो पैसिफिक। So with this they can overcome this dilemma. And for this large infrastructure developments, especially in the least developed and developing countries, so what is happening? China is going to leverage its influence around the world, क्योंकि वो ऐसे countries में invest कर रहा है, ऐसे countries में infrastructure बना रहा है. So with this, China's influence around the world is growing. And because of this, it is said that this can alter the rules of global order, and slowly and slowly, rather not slowly, right now China is somewhat challenging indirectly the Western powers. The Belt and Road Initiative also strengthened China's presence in the Eurasian region as well, because here over the Central Asia and Europe. So when somebody is having influence in the Eurasian region, it is actually Asia's heartland. So China will have a commanding position over there. So it gives China an upper hand as well. So these are the unstated regions, but what we can analyze officially, तो हमने देख लिया कि भाई हम कल्चरल एक्सचेंजेस चाहते हैं, एक अच्छी ट्रेड कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं, दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ना चाहते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम these are the advantages that China gets from this Belt and Road Initiative. And there are some major things because of which the Belt and Road Initiative is being criticized. It is seen that this is China's debt trap policy, where China intentionally is giving excessive credit to other countries, and the intention of China is to extract their economic concessions, slowly their political concessions, because once a country is debtor, once the country has taken debt from the other country, slowly and slowly that China can take away their economic concession and political concession. So this is part of the China's debt trap. Majority of the critics, they see China's Belt and Road Initiative as a part of China's debt trap policy. Today, for most of the Asia, connectivity and infrastructure development is the major areas of concern, and that is the need of hour. But those areas which need connectivity, those areas lack finances which are required to develop that kind of infrastructure, and also they need a capacity to develop that. But China has overcapacity. So with China's overcapacity, they are overriding such host countries' development priorities. They are changing the development priorities in their project selection because China has overcapacity. So China is offering them such leverages with which the host country is diverting their project selection. There are some local elites which may corner the spoils from these new projects, जिससे कि social tensions create हो रहे हैं. There are serious concerns regarding the contracts and jobs, because majority of these contracts and majority of these jobs are given to Chinese firms and the Chinese people. तो जिन areas में वो project लगने हैं, different countries में लगने हैं, वहाँ पे अगर वो jobs नहीं create कर पा रहा, वहाँ से अगर वहाँ की firms को अगर benefit नहीं हो रहा, तो this is calling for objection.
एंड दिस इज द रीजन वाई बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की इम्प्लीमेंटेशन को लेकर प्रोटेस्ट किए गए हैं कि भाई इससे जो हमारा कंट्री है उसको क्या फायदा हो रहा है. प्लस there are different levels of development, the poor governance condition of different countries. जिन कंट्रीज़ ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करने की बात की है उनकी डेवलपमेंटल कंडीशंस अलग हैं, उनकी गवर्नेंस की कंडीशंस अलग हैं. अल्टीमेटली दिस विल इफेक्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. It will affect the infrastructure development, it will affect the trade and investment in those regions. And today, especially if you talk about West Asia, the number of countries in which political instability is there, it is constantly increasing, be it Syria, Yemen, Sudan. So when Belt and Road Initiative passes through West Asia, and with these countries having political instability, this also poses a serious security threat or serious security issue for the China's Belt and Road Initiative. And the one point for which India is mainly concerned is that we have sovereignty related dispute, जिसे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने भी साइट किया है. लाइक विद इंडिया it makes it uncooperative. We are not cooperating with Belt and Road Initiative development because we say it passes through our territory. It passes through POK, which is part of India. And then apart from all of this, Belt and Road Initiative it also has the potential of ecological and environmental consequences, especially in the developing countries, and therefore for many countries this project becomes undesirable. This was about the Belt and Road Initiative. Next that we have is China-Pakistan Economic Corridor, CPEC. Now, because the name is clear, China-Pakistan Economic Corridor, so it's a bilateral project between Pakistan and China. And aim over here is to promote connectivity between both the countries, for which network of highways, railways, pipelines are built. And when you are building highways, railways, pipelines, so on the same line, some energy projects, industrial projects, or other infrastructure development is also taking place. Here the main aim is to link the western part of China with the Gwadar port in Balochistan, Pakistan. चाइना के वेस्टर्न पार्ट को सी के साथ लिंक करने के लिए ग्वाडर पोर्ट के साथ, जो कि बलोचिस्तान में है, विच इज़ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, लिंक करने के लिए ये हाईवे, रेलवे, पाइपलाइन बनाए जा रहे हैं. इट विल बी रनिंग फॉर सम 3000 किलोमीटर्स. चाइना का जो वेस्टर्न प्रोविंस दैट इज जिनजियांग, अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, बलोचिस्तान, इनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा, खुंजेरा पास से पास करवाया जाएगा. So it will clearly make way for China with this. They can easily access the Middle East, the West Asia, Africa, and this will enable China to access Indian Ocean. And इससे पाकिस्तान को क्या फायदा है? China is supporting the development projects in Pakistan. They're trying to, solve the energy crisis of Pakistan and stabilize the economy of Pakistan. CPEC is also part of BRI only, because with this as well, the China's connectivity towards the Indian Ocean and the West Asia and Africa, that will increase. But again, CPEC also comes with some issues. Like, first of all, if we talk about from India's perspective, the establishment of this CPEC project through POK, it is seen by India that China is infringing on our sovereignty. China is building the roads and infrastructure in the disputed territory of Gilgit-Baltistan, which is part of POK, but ultimately India claims the entire Pakistan occupied Kashmir as part of Jammu and Kashmir. So if China is building some such infrastructure in Gilgit and Baltistan, India is definitely going to object it, which we are doing. China-Pakistan corridor, it passes through Pakistan occupied Kashmir and Balochistan. Now, Pakistan occupied Kashmir story we all know, but also Balochistan in Pakistan is also facing some long running insurgency. So the threat of terrorism and security risk come hands in hand in both of these regions.
China-Pakistan economic corridor would also hamper India's interest as well. The interest that we have in the South Asian region, because this can aid Pakistan's legitimacy in Kashmir dispute as well. And plus there are also attempts which are going on to extend this corridor to Afghanistan. So this can undermine our position as economic partner of Pakistan, Afghanistan, security partner of Afghanistan, and even strategic partner. Plus, not just with Afghanistan, there is also a strategy of having China-Myanmar economic corridor. China is also developing China-Nepal economic corridor, which will link Tibet and Nepal. So the endpoints of these projects are touching, especially the China-Nepal, it is touching the boundaries of Ganga plains. तो एक तरफ पाकिस्तान की तरफ CPEC, यहाँ पे चाइना नेपाल कॉरिडोर और यहाँ पे चाइना म्यांमार कॉरिडोर, तो ये तो इंडिया को तीनों तरफ से घेरने की बात हो गई. So these three corridors have economic benefit for China. Also, they are rising strategic, issues with respect to India. And another issue with the China-Pakistan economic corridor is basically lack of transparency and accountability. Because this is going in the favor of China economically and strategically. The project may even undermine Pakistan's sovereignty, because now ultimately Pakistan's foreign policy will be dictated by China, and it is already complicating its relations with some other countries, and it is creating political instability in South Asia as well. So, what is the current status of China-Pakistan economic corridor? Especially in terms of how many projects are getting completed or abandoned. China-Pakistan are really careful about it, that there should not be some major projects which are getting abandoned. There are some big ticket projects that have moved ahead, but slowly than planned. There are so many of these projects at Gwadar which are not still finalized. Like the major railway upgrade, जिसे ML1 कह रहे हैं. In fact, both the sides are trying to become more transparent about what has happened and what has not happened. But the shorthand version of this is that a lot of energy projects were completed. Some of the road projects are completed, but there are many which are not completed yet. There are some special economic zones which are pared down to smaller number. जो originally सोचा था उतना नहीं है, but कुछ setup किए गए हैं, but again the movement is slow. And most of the projects around Gwadar mainly, they are very far from completion. So why this slowdown is happening? Although Pakistan made the project proposals, China has the money to invest in it. So what is happening at the end? Why these projects are not getting completed? Why this slowdown has happened? Understand this. कुछ तो ऐसे energy projects थे which were promoted very actively by previous government, which could be realized pretty quickly, especially the coal-fired power station in particular. But there were some which did not move ahead. And there is a sense of disappointment in this whole venture that adds up to this. Less than what both the sides hoped for. There are some special economic zones that ran into obstacles quite quickly from Pakistan's businesses. They were concerned that China is given some special benefits and इससे जो पाकिस्तान की domestic firms हैं उनको disadvantage होगा. There were some issues about land allocations as well. Plus, there are some issues around how financing of the Pakistani side is happening, especially at the certain projects. And China is insisting कि यहाँ पे होना चाहिए. Pakistan is saying some other thing. So there are some mismatch happening over there as well. Plus, there are some uncertainties as of now about the economic feasibility of some projects, like some hydroelectric dams, some railways. So there are some uncertainties about that as well. Gwadar is
very difficult as a location, like if we talk about logistically or in security terms, because it is in Balochistan. So security threats are creating major problem now. There are only a few items in the long list of reasons why some parts have moved forward quickly but others have not. And especially if we talk about Pakistan's financial situation, so it is constantly deteriorating since 2018 mainly. There were political uncertainties for China, civil military contention happening over the control of CPEC. There were some Chinese disputes with the government under Imran Khan also. So CPEC never could really find its feet again. So there is a lot of slowdown that has happened here. So these are two major connectivity projects with which India is concerned as of now. So you should know about these, why India is objecting to it, those keywords: sovereignty, integrity, territorial integrity, respecting international laws. On these bases, we are objecting to these, right? So that is all for this video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.